students, today we are going to see our next chapter, that is Dr. Dolittle learns animal language. Have you ever spoken or ever talked to any animal? So Dr. Dolittle is one person, or we can say is a one doctor who can talk with animals, or you can speak in animals language. And what are the languages of animals and to whom Dr. Dolittle talks, we will see in this chapters. Now listen. Doctor said Polynesia, and I'll tell you something. Did you know that animals can talk? Now listen, doctor, said Polynesia. Now who will Polynesia we will see in the story. And I will tell you something. Did you know that animals can talk? I knew that parrots can talk, said the doctor. As you can see in the picture, Polynesia is none other than a parrot. So parrot says to Dr. Dolittle, now listen doctor, I will tell you something. Did you know that animals can talk? She is asking to the doctor that animals can also talk. Did you know? I knew that parrots can talk, said the doctor. Doctor said that parrots can talk. Oh, we parrots can talk into two languages, people's language and birds' language. Means parrots can talk, parrots can copy our languages. Everyone knows that parrots can talk in our language, okay? But they can talk, they have two languages. One is human language, people's language, in which they copy the words we speak or we tell to them, and another language of there is birds language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants a biscuit, you understand me, but hear this, ka kui e fi fi. You can understand this? No. And humans or people can understand their language only. Polly wants a biscuit. If parrot says Polly wants a biscuit, Dr. Dolittle can understand, and he gives a biscuit to Polly. But if Polly speaks in bird's language, ka ui fi fi, doctor can understand, anyone can't. So good gracious, cried doctor. What does that mean? That means, is the porridge hot yet? Is the porridge hot yet? In the bird's language. Means we understand the people's language, but one another sentence that Polynesia says to doctor, and doctor started crying. And what was the sentence? Ka ui fi fi, in the bird's language. Doctor said, good gracious, but I can't understand this language. And doctor asked to Polynesia, to the parrot, that what does it mean? So Polynesia says to doctor, is the porridge hot yet? In the bird's language. Here you can see in the cup, that is the thing to drink, and that is known as porridge, hot thing. And she is asking to the doctor, is the porridge is hot yet? In the bird language, in this way, का उई फी. मीन्स यहाँ पे एक डॉक्टर है और यहाँ पे एक पैरोट है. सबको ये पता है कि पैरोट्स इंसानों की लैंग्वेज कॉपी करके बोल सकते हैं, लेकिन उनकी एक और लैंग्वेज होती है जो बर्ड्स की लैंग्वेज होती है. अगर पॉली इंसानों की लैंग्वेज में ऐसे बोलती है कि पॉली वांट्स अ बिस्किट, तो हम समझ जाते हैं कि पॉली को बिस्किट चाहिए. लेकिन अगर वो पैरोट्स की भाषा में बोलेगी का उई फी फी, तो इसका मतलब किसी को पता है नहीं. तो डॉक्टर डोलिटिल पॉली को पूछते कि इसका मतलब क्या है, रोते हुए कि अरे मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ. तो पैरोट जो पॉली है वो बोलती है, इसका मतलब है कि पोरेज अभी तक हॉट है क्या. पोरेज जो मतलब यहाँ पे जो गरम गरम चीज़ रखी हुई है जो सर्दियों में पी जाती है, ये अभी तक गरम है क्या. बर्ड्स की लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है. My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. What would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuits crumbs off her left wings.
You wouldn't have understood me if I had. अरे मतलब डॉक्टर बोलता है, ओ यू डोंट से सो, आपने मतलब पैरोट पॉलिनेशिया ने तुमने कभी मुझसे ऐसे पहले बात नहीं की। तो वो पैरोट जो पॉलिनेशिया है अपने विंग्स के ऊपर से वो जो बचा हुआ बिस्किट का पाउडर है उसको झाड़ते हुए, मीन्स थोड़े से ऐसे एटीट्यूड में डॉक्टर को बोलती है, अगर मैंने बोला भी होता तो भी आपको समझ में नहीं आता मेरी बात। टेल मी सम मोर से डॉक्टर। अब डॉक्टर क्यूरियस हो गए, उनको और लैंग्वेज उसकी और सेंटेंसेस जाननी थी। ऑल एक्साइटेड एंड ही रश्ड ओवर अ ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम बैक विथ ए नोटबुक एंड अ पेंसिल। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन, दिस इज इंटरेस्टिंग, said the doctor. Doctor ran rushed over the dresser drawer. ड्रेसर ड्रॉर के पास डॉक्टर रन करता है और अपनी फटाक से एक नोटबुक और पेंसिल बाहर निकालता है और बोलता है कि गो स्लो, आई विल राइट। वो नोट डाउन करेगा सब कुछ, जो कुछ भी वो बोल रही है, ताकि वो वर्ड्स की लैंग्वेज सीख सके। नाउ this was very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. अब देखो हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, ABCD, it is basic. So doctor wants to learn the birds ABC first of all. So the Polynesia teach the doctor birds ABC first slowly, so that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him the bird words to put down in the notebook. So all day, all that afternoon, Dr. Dolittle was learning birds' language with the help of Polynesia, who was sitting on the kitchen table. At the tea time, when the dog Jip came in, the parrot said, Doctor, see, he is talking to you. Now, at the tea time हो गया शाम में, तो क्या हुआ, one dog came and started barking. और parrot says that, see, he is talking to you, means the dog is talking to Dr. Dolittle. Looks to me as though he was very scratching his ear, said the doctor. मीन्स वो जो अपना कान स्क्रैच कर रहा है जो डॉगी, वो ये कहना चाहता है उससे कि मेरे पास देखो। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, सेड पैरोट इन हाई वॉइस, रेजिंग हर आईब्रोज। अब वो कान स्क्रैच कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है पॉलिनेशिया की तरह, तो कैसे पता चलेगा कि ये बात कर रहा है उसकी लैंग्वेज में। तो पॉलिनेशिया लाउडली क्या बोलती है कि एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड पैरोट हाई वॉइस, और उसके आईब्रोज रेज करते हुए, दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग. Sometimes they don't want to make a noise. Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? What does it mean? What does that mean? Asked the doctor. Now the dog is twitching up one side of his nose. One side of his nose. What does it mean? Asked the doctor. That means, can't you see that it has stopped raining? पॉलिनेशिया आंसर्ड. मीन्स इसका मतलब ये होता है, पैरोट ने आंसर दिया कि वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि बारिश ख़त्म हो चुकी है. ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन. डॉग्स यूजेस देयर नोज, मीन्स वो जो अपनी नाक सिकोड़ के कुछ भी जो करते हैं हरकतें, उसका मतलब ये होता है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे. After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being people's doctor altogether. Here,
Now, after learning animals' language from the parrots, after a while, डॉक्टर को इतनी अच्छी तरह से एनिमल्स की लैंग्वेज आ गई कि उसने इंसानों का डॉक्टर बनना छोड़ दिया और जानवरों के लिए जानवरों को लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना ये सब कुछ ही वो काम करने लग गया. एंड यू शुड नो दैट देर इज़ वन हॉलीवुड मूवी बेस्ड ऑन डॉक्टर डो लिटिल एंड इट इज़ इन रियल. ये सच की ही है. तो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है डॉक्टर डो लिटिल की, और जिसमें वो सारे एनिमल्स से बात करता है, सारे एनिमल्स से उनकी प्रॉब्लम समझता है, सब कुछ सब कुछ. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डो लिटिल learns animal language. I'm going to provide you picture along with this video, and you have to write the question answers in your notebook. So do complete your homework. Thank you.